has finally made it from Delhi. Autonomy of the RBI. I am the most vocal supporter of autonomy of the RBI. But that does not prevent me from calling the government. The RBI governor gladly gave that advice based on his experience. Thank you, sir. Not only describe the economy, but I think politics, economy, all facets of life. And now I request Mrs. Morarka to felicitate Mrs. Sinha. But not Bihar Chief Minister, because he explained it differently, Bihar. Before you came, they spoke of Bihar. We have Mrs. Kamal with us, and may I request her to present a bouquet to Mr. Ramesh Sippy, who is with us. जैसे मैंने कहा ना, शोले पिक्चर वापस नहीं बनती है. कब Thank you. Mr. Sinha, will you take some questions, or I propose a vote of thanks? If anybody has any questions, please. Yeah. You mentioned the example of a whole session being lost. I was in Lok Sabha at that time, and we are both aware of the reasons why the stalemate arose. If only the government had reached out to the opposition, as indeed it did during the inter-session period, and before the budget session came, it had agreed to appoint the JPC. So if they had on any day in the winter session agreed to appoint the JPC, then that session would not have been lost. The point remains that the government of the day, including the present government, must reach out to the opposition. I'll give you an example. When I was finance minister, we had that famous market scam. And the opposition had demanded the setting up of a JPC outside the parliament, because parliament was not in session. And we met in government, some of us, and we decided we'll concede this. We'll have a JPC. And we decided this decision was conveyed to the opposition. And on the very first day, the Parliamentary Affairs Minister, a very distinguished son of his state, moved that resolution for the appointment of a joint parliamentary committee. And the House functioned, Houses functioned. There was no statement. So what does the present situation demand? The present situation demands that the government and the opposition should sit down together, discuss what the demands of the opposition and how best the demands can be met in order to ensure
that the monsoon session is not lost, where we have such important business to do for the sake of India's economy. So that establishes the validity of the reforms to be a manufacturing giant, and we have to put together those conditions. The last government had the manufacturing commission, was it? There was a commission led by Krishna Murthy. National Manufacturing Commission, they made the recommendation. We have the first 5 of that, starting in 1952. You will find that every government has emphasized manufacturing. Every plan has emphasized manufacturing. It's only a level to which we should have reached. Yeah, so to what extent does the present government make in India means made in China? No, I have a point of view, despite the fact that I've been brain dead for years. I wrote last Dr. Ram, you will not be taking. I'd like to say one more thing, that Make in India and Made in India means, what I'm trying to say is that there are two opinions, a strong rupee and a weak. We honor you, but the wisdom which you gave us today, and we are all enlightened by your views. You should make one trip a month to Mumbai, and we will organize an interactive session. Kamal has told me it will be useful, not for us, but for everybody who are little uneducated on many fronts. So we all get educated from you. And the way you speak and where you are knowing the subject on all counts. So thanks media everybody for being with us. And you can join us for dinner. Thank you. सर सामने देखिए सर कमल का कमाल है बाकी Yes. सर यहाँ पे राइट पे राइट Call, name, fame, or achievements I've had in my life, mostly it has been through films, and the recognition has been always through films. Now working with my daughter in Akira, name is Akira, title is Akira, okay. She's the apple of the eye, she's my most darling daughter, she's the answer to our prayers, and I dare not think of saying no to her. Since she said, insisted, and of course I'm very impressed with the director Murgo Das also, he personally came, so I said, okay, if that is so, your wish is my desire, and I shall do that. Your wish is my command, and I shall do that. So I'm doing it for my the film director Murgo Das, but last but not the least, most especially I'm doing for my daughter Sonakshi. Sir, Mumbai is the financial capital of the country. जिस तरह से रेल में इतना सारा चौपट हो जाता है इशू, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कम से कम अभी तो इशू बदलने चाहिए, बिकॉज इट्स बीन मोर देन अ ईयर. अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई एंड भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छे से इस पर अपने विचार रखे हैं, और सिर्फ हमें अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद सिर्फ बारिश के भरोसे टिकना या बारिश की बात करना या बारिश के सहारे रहना या बारिश के जरिए भविष्य निर्धारित करना मुझे सही नहीं लगता. सर बारिश में जिस तरह से इतनी मुश्किल होती है मुंबई जैसे शहर में बारिश, हाँ वो तो देखिए हमें देखना है, हमें करना है, क्योंकि ये तो इतने सालों से पहले होना चाहिए था, पर अभी भी चलो बेटर लेट देन नेवर. अभी भी जब आँख खुली तब सवेरा, अब तो कर दो. अभी तो मैं खुद आ रहा हूँ, जितने पॉटहोल्स देखे हैं मैंने, जितने पीएम से आप तो ज्यादा देखते होंगे, तो देखा है मैंने,
दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। लालू और नीतीश एक हो गए, कहीं ना कहीं जो पुराने दुश्मन थे कहीं ना कहीं एक हो गए। अब आप बीजेपी की क्या नई नीति होगी आपकी? देखिए, मैं पहली बात बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में अपने आप को कहीं नहीं पाता हूँ, न चाहता हूँ। बिहार का मुख्यमंत्री बनने की ना ही मेरी कोई इच्छा है और ना ही अपेक्षा है। मैं समझता हूँ कि जितना दूर हो इससे अच्छा, क्योंकि वहाँ पे एक से एक उम्मीदवार, एक से एक दावेदार, एक से दमदार और एक से एक जानदार लोग शामिल हो चुके हैं और सामने आ चुके हैं। कौन सा नेता सामने आप देखते हैं जिसको चेहरा फेस होगा? जो मैं अभी ये कह सकता हूँ फेस को, और किसका चेहरा होगा और किसका चेहरा सही होगा और किसका चेहरा अंतोगत्वा काला हो जाएगा, वो तो बात की बात है। मैं तो अभी यही कह सकता हूँ कि बिहार में कभी भी या किसी भी इलेक्शन में, किसी भी चुनाव में कभी भी ओपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिहार में इस वक्त हमारे सामने एक चुनौती है, जिस चुनौती को हम एकतापूर्वक एकजुट और एकजुट होकर सामना कर सकते हैं अनुशासन के साथ। लेकिन सिर्फ अतिशयोक्ति करके या ओवर रिएक्ट करके या ओवर कॉन्फिडेंस में मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा हमारे लिए भी, हमारे लोगों को। वो चुनौती कहीं ना कहीं आप नीतीश और लालू को मिलने को आप कह रहे हैं? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ जाहिर है कि वो लोग मिले हैं, वो लोग ट्राइड टेस्टेड हैं, उन्होंने पहले अपनी अपनी शक्ति की आजमाइश की है, अपना परफॉर्मेंस दिया है। दोनों इतने सालों से बिहार के मुखिया के रूप में रहे हैं, वो उनके लोग और उनका परिवार। तो मैं समझता हूँ कि इसको सामने उनका एकजुट और एकजुट हो जाना हमारे लिए एक सबब ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक चुनौती भी है, और हम उस चुनौती का सामना करेंगे अगर हमारे अंदर भरपूर अनुशासन होगा, हम एकजुट और एकजुट होंगे तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर पार्टी ने आपको आगे खड़ा किया कि आप आगे करिए मुख्यमंत्री के लिए आप चुनाव, तो आप क्या पीछे हटेंगे या आप उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं इस वक्त आपके आगे खड़ा हूँ और मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। Sir, how creatively involved are you in your son's production house? How creatively are you involved in your son's production house? Their mother is more active. She is our leader too, Mrs. Poonam Sinha, and she is working very hard. Whereas I am concerned on that front, I am working hardly. Thank you.